I hope I am audible to you. 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 I hope, okay. I hope I am audible to you. Okay, I am audible. So today we are going to see another chapter from your anatomy physiology, that is a urinary system. Urinary system, and after this tomorrow we'll take diuretics. Tomorrow we'll try to finish the diuretics also. So anatomy physiology of urinary system, right? So once you understand the urinary system, and then only you are going to understand the diuretics, because diuretics are the diuretics is a chapter present in the pharmacology, and that is an applied chapter, but the basis for that the basis for the diuretics chapter is nothing but the urinary system. As I told you last time also, a lot of time I used to say these things. So while studying the pharmacology, medicinal chemistry, you have to study interdependent. You can prepare 3 subjects parallelly, like anatomy physiology, then pharmacology, and then medicinal chemistry. So we have seen cardiovascular system from HCP point of view. After that we have shifted to that drug acting on cardiovascular system in the pharmacology. We have seen that chemistry of that drug acting on cardiovascular system is remaining. So we'll take in upcoming sessions. We'll try to finish this urinary system today, and tomorrow we'll finish the diuretics chapter also, and on Tuesday we'll start the medicinal chemistry of cardiovascular system, right? So it is a very simple chapter. Try to finish it today only. तो चैप्टर का नाम क्या है? ड्रग, है ना? चैप्टर का नाम है आपका यूरिनरी सिस्टम, और यू कैन so from anatomy physiology, that is human anatomy and physiology, from that urinary system. So once you understand the parts of urinary system, their structure, means anatomy of urinary system, and if you know physiology of urine formation, how there is formation of urine in the human, so you can understand the diuretic chapter. So urinary system is the basis for diuretics, so that's why we are taking first. First of all, what do you mean by urinary system? So you know, in anatomy physiology, you have cell, collection of cell become a tissue, collection of tissues for particular function becomes organ, and collection of organ for particular job, that become a system. And your human body is made from a multiple system, like nervous system, cardiovascular system, digestive system, respiratory system, your skeletal system, your urinary system, your your gonadal system, you know. So your body is made from this system. So one of the such system is nothing but the urinary system. Now first of all, what are the parts of urinary system? Get familiarized with the parts. So urinary system में क्या क्या आता है? So in the urinary system, you have a pair of kidneys. In the urinary system, you have pair of kidneys. दो किडनी होता है, a pair of kidneys, 2 kidneys, right? Then, as a part of urinary system, again you have ureters.
2 kidney, 2 ureters. Left kidney, and this one is the right. This one is the right. Right. This one is the left. Right and left kidneys. 2 kidneys, 2 ureter, respectively, right and left ureter. 1 urinary bladder. 1 urinary bladder. Hello. 1 urinary bladder and 1 urethra. So parts of your urinary system. So in the urinary system you are having 2 kidneys, 2 urinary urethra, 2 urethra, 1 urinary bladder, 2 kidneys, 2 ureters, 2 इसमें 2 किडनी होता है, 2 यूरेटर होता है. यूरेटर मतलब it is like a tube, muscular tube that will carry a urine from kidney to your bladder. So ureters are 2, bladder is 1, and urethra is the last part of urinary system. Right. So it is the overall organs of urinary system. There are 2 kidneys, 2 ureters, 1 urinary bladder, 1 urethra, and on each kidney के ऊपर है ना superior, inferior. Superiorly kidney is okay. Superiorly on the kidney you have adrenal glands. Superiorly on the kidney you have adrenal gland. This yellow part is known as adrenal gland. Right. Inferiorly, so this is the urinary system. So we'll see one by one. Right. So large amount of waste material is in your body. Your body is a metabolic hub. आपके बॉडी में इनटेक लगता है, उसको मेटाबॉलिज्म होता है. मेटाबॉलिज्म होने के बाद में आपको एनर्जी मिलता है. बट ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म द प्राइमा फेसी फंक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म इज नथिंग बट द टू गेट एनर्जी. एनर्जी तो मिल रहा है आपको, बट इन द मेटाबॉलिज्म देयर इज सम वेस्ट मटेरियल. लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट मटेरियल is generated in the body, you know. For example, carbon dioxide from tissue respiration, the residue of undigested food. आप जो खाना खाते हो उसमें के digested तो ठीक है, undigested food, heavy metals, drugs, their metabolites, toxic metabolites, some bacteria, they must be removed from your body for a good health, है ना. So आपके इसमें जो आप खाना खाते हो, जो whatever food you are taking, so all food is not absorbed in the system circulation. So food is digested, it is broken down. So waste material is removed from your anus through alimentary canal. So whatever metabolic waste is there in a tissue, that is a carbon dioxide, so that is removed from your respiratory system. Right. So whatever other metabolic waste, like for example, urea is the metabolic product of your amino acid and protein. Uric acid is there, you know. So a lot of metabolic waste, so they are removed from the, so mostly water soluble waste material they are removed from the body through a urinary system, through a urine. So for the excretory function of your body, for the excretion, you know, excretion मतलब क्या, to remove. तो excretion मतलब to remove. Intake, utilize and excrete. अंदर ले लो, utilize करो, बाद में excrete करो. So excretory function of your body. What are the excretory system of your body? So one of the such system is a digestive system. So digestive system also works as a excretory system. तो digestive system का क्या, digestive system का काम क्या होता है? To intake the food, to break down the food, है ना, convert it into a absorbable form, and whatever is not required, that is removed. So food residue, some bacteria, toxic substances, they are excreted through a feces. So digestive system also works as a excretory system. Then some unnecessary or excretory gases, they are removed from lungs. So removal of carbon dioxide particularly from lungs, and also some part of water vapors. So lungs also
are having excretory function. Skin is also having excretory function. This is, for example, removal of salt in the form of sweat, removal of salt, then some water, removal of salt and water, and also it is also excretory function, also excrete the heat. तो आपकी बॉडी में जो हीट है वो भी एक्सक्रीट करता है कौन? स्किन. तो skin is also having excretory function. So obviously lungs, the main function of lung is nothing but the exchange of gases to purify the blood. Main function of digestive system is nothing but the to get the food material digested, converted into absorbable form, to need a metabolic demand of bodies. Skin का function अलग है. Main function क्या है? Production of underlying tissues, the production of vitamin D3. But along with the main function of this system, they also serve as an excretory function. Your liver is also there. Liver is a metabolic factory of your body. Liver का काम क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म करना, सिंथेसिस करना, ब्रेक डाउन करना. But along with that, it also produces the bile pigments, heavy metals, drugs, toxins, bacteria. They are also removed through a bile. So liver is also having excretory function. So these are the systems which have excretory function. But the main excretory or main excretory system of your body is nothing but the urinary system. यहाँ पे उसके बाद में urinary system of the urinary system is the main system of your body which involves the excretory function. सबसे मेन क्या है? यूरिनरी सिस्टम. बाकी सिस्टम को भी एक्सक्रीटरी फंक्शन है. डाइजेस्टिव को है ना, आपका रेस्पिरेटरी लंग्स को है. स्किन आल्सो एक्ट एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन. योर लिवर आल्सो एक्ट एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन. बट and a large amount of water soluble waste material they are removed in the form of urine. Urine से जाता है. That's why urinary system is the largest, right? So parts of urinary system we have seen there are two kidneys, two ureters, one urinary bladder, one urethra. Right? So urinary system has a maximum capacity for the excretion. सबसे ज़्यादा क्या capacity किसका है? urinary system का. Now you can expect one question from this urinary system. है ना, अगर HAP point of view से if you think, so they can ask only one or maximum two questions in the GPAT Niper. तो urinary system से ज़्यादा उतना important नहीं है, diuretics से ज़्यादा important. But the basis for diuretics is nothing but the urinary system. That's why we are discussing. ना, I hope I am audible to you clearly. तो देखो urinary system has a maximum capacity for the excretion. Maximum capacity for the excretion. Then main role is nothing but the hemostasis. Hemostasis मतलब क्या है? To maintain the volume of blood, water balance of your body. Hemostasis to maintain the volume of blood and maintain the water balance of your body. Maximum capacity for excretion is for the urinary system. It also maintains the hemostasis, prevents the acidosis. Now system includes urinary system में क्या आता है? Urinary system includes two kidneys, two ureters, one urinary bladder and one urethra. Urethra is the last part through which urine passes to the external environment. Now what are the functions of kidney? Functions of kidney के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है. That's why important functions of kidney. So here today we'll discuss the discuss the extract of urinary system. We'll discuss only essence. We'll discuss only the important part for GPAT Niper DI Pharmacist. तो पूरे के पूरा urinary system में HAP के रेफरेंस बुक में से एक्सट्रैक्ट किया है यहाँ पे. तो वो इम्पोर्टेंट पार्ट दिख रहा हो है ना. क्वेश्चन आता है आपको कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ किडनी. तो आपको पूरे फंक्शन मालूम होने चाहिए. 2-3 फंक्शन तो सबको मालूम होते हैं, सबको सभी फंक्शन मालूम नहीं होते, इसलिए तो पूरा मैं रिवाइज कर रहा हूँ ना आपको. यस. सो मेन फंक्शंस ऑफ किडनी. तो मेन फंक्शन इज नथिंग बट द hemostasis.
Homeostasis, hemostasis. Hemostasis means what? Maintenance of fluid balance in the body, maintenance of blood volume, है ना? So kidney will maintain the blood volume, will maintain the water balance in the body, known as hemostasis. So what? Excretion of waste product. Another function of kidney. Kidney will maintain a hemostasis by excretion of waste product, like for example urea, which is the metabolism or metabolic product of your amino acid and protein. Depending on that, animals are classified into ureotelic, uricotelic. Those animals which excrete urea as a waste product of metabolism of amino acid and protein is ureotelic. Some animals excrete uric acid, they are known as uricotelic, which is a metabolic product of your न्यूक्लिक एसिड्स. तो जो डीएनए आरएनए का मेटाबॉलिज्म होने के बाद में यूरिक एसिड बनता है ना, यूरिक एसिड. सम है ना, देन क्रिएटिनिन इन ह्यूमंस यूरिया एंड यूरिक एसिड बनता है. क्रिएटिनिन इज आल्सो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ योर मसल में मेटाबॉलिज्म होने के बाद में क्रिएटिनिन बनता है. तो दैट्स व्हाई अगर क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया मतलब क्या होगा, तो होता है मसल में कोई दिक्कत है. Creatinine is also creatinine kinase is also an enzyme that is used in the diagnosis of muscular dystrophy, muscle degeneration होता है उसमें. Now bilirubin. So bilirubin is a degradation product of your hemoglobin. We have seen in the blood. So then toxins, drugs, and its metabolites, heavy metals, pesticides. So all these are removed from your kidney. So kidney का काम है excretion of waste product like urea, uric acid, creatinine, bilirubin, toxins, then heavy metals, pesticides, metabolites of drugs. एक तो ये hemostasis. Then second, maintenance of water balance. How kidney will regulate your water balance? Either by increasing or decreasing the urine formation. अगर मान लीजिए आपके बॉडी में वाटर लेवल ज़्यादा हुआ है नॉर्मल से, तो क्या करेगा, मोर यूरिन फॉर्मेशन होगा. तो इफ योर वाटर इज मोर देन नॉर्मल और इफ योर ब्लड वॉल्यूम इज मोर देन नॉर्मल, देयर इज इंक्रीज द यूरिन फॉर्मेशन. अगर कम हो गया तो डिक्रीज होगा, राइट. तो बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द यूरिन फॉर्मेशन, किडनी विल रेगुलेट द वाटर बैलेंस ऑफ योर बॉडी. देन अगेन किडनी विल रेगुलेट मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. किडनी विल रेगुलेट द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. तो सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, है ना, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, phosphate. So all they are regulated by kidney, mainly with the sodium and water. So kidney will regulate the sodium and water. Main क्या कर रहा है, सोडियम वाटर रेगुलेशन. बिकॉज सोडियम वाटर यहाँ पे याद रखना है, सोडियम और वाटर का अफेयर चल रहा है. सोडियम वाटर का अफेयर चल रहा है. दे कैन नॉट लिव ईच अदर विदाउट ईच अदर. तो सोडियम और वाटर ये दोनों एक में के बिना रह नहीं सकते. तो जिधर सोडियम जाएगा उधर उसके साथ में पीछे क्या जाएगा, वाटर. मतलब if there is absorption of sodium through kidney, water will be absorbed. If there is excretion of sodium through kidney, there is a excretion of water also. तो इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है भाई, तगड़ा वाला अफेयर चल रहा है. तगड़ा वाला अफेयर चल रहा है किसके बीच में, इसके बीच में, सोडियम एंड वाटर के बीच में. तो सोडियम वाटर एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, बस ये याद रखना है ना. देन ओके, सो किडनी विल रेगुलेट द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेनली वाया सोडियम वाटर, है ना, मेनली वाया सोडियम वाटर रेगुलेशन. एंड आल्सो रेगुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ योर ब्लड, ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड. मेंटेनेंस ऑफ एसिड बैलेंस बाय किडनी विल रिमूव द लैक्टिक एसिड. Also removes the kidney will remove the lactic acid along with the lungs. Also remove the other acids, sulfuric acid, phosphoric acid. So will regulate the maintenance of acid balance. अगर ज़्यादा एसिड हो गया बॉडी में तो एसिडोसिस हो गया, ज़्यादा अल्कली हो गया तो अल्कलोसिस हो जाएगा. That's why kidney has a regulation. Kidney has a
रोल ऑफ रेगुलेशन ऑफ एसिड बैलेंस इन द बॉडी। नेक्स्ट होता है प्रोडक्शन, है ना, नेक्स्ट होता है प्रोडक्शन। किडनी आल्सो हैज अ इंपॉर्टेंट फंक्शन, देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन अपन ने देखा है ब्लड में, इरिथ्रोपोएटिन क्या है, इट इज अ हार्मोन, है ना, which produces the, which stimulate the production of RBC. Erythropoietin is a hormone responsible for the production of RBC. Now erythropoietin is produced in the kidney. तो किडनी का एक काम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ इरिथ्रोपोएटिन, थ्रोम्बोपोएटिन, है ना, हेमेटोपोएटिक फंक्शन, दिस आर नोन एज हेमेटोपोएटिक फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी will produce erythropoietin, kidney will produce thrombopoietin, which will stimulate the thrombocytes. Then kidney also has an endocrine function. एंडोक्राइन फंक्शन क्या है किडनी के, किडनी प्रोड्यूसेस द, है ना, जैसे ये एंजाइम हार्मोन्स, इरिथ्रोपोएटिन, थ्रोम्बोपोएटिन। देन किडनी आल्सो प्रोड्यूसेस द रेनिन, रेनिन ना, रेनिन अपन ने देखा है हाइपरटेंशन में, तो किडनी प्रोड्यूसेस द रेनिन, पर्टिकुलरली जेजी सेल, जो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी, जेजी सेल्स ऑफ किडनी विल प्रोड्यूस रेनिन। इसके ऊपर 4 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो एटलीस्ट 4-5 टाइम्स क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। Kidney also produces the calcitriol. Kidney also produces the calcitriol. मतलब क्या कि विटामिन डी जो होता है उसका एक्टिव फॉर्म क्या है, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज 1,25 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, आल्सो नोन एज कैल्सिट्रॉल, है ना, 1,25 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, आल्सो नोन एज कैल्सिट्रॉल। तो 1 hydroxy also known as calcidiol, 1,12 dihydroxy, sorry, 1,12 hydroxycholesterol is cholecalciferol, calcidiol, है ना, ड्यूरिंग द, है ना, वो बनता है कहाँ पे, लीवर में, है ना, लीवर में बनता है। उसके बाद में while passing in the kidney, तो एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज प्रोड्यूस इन द किडनी, याद रखना है आपको। 1,25 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल इज नथिंग बट द कैल्सिट्रायोल which is produced in the kidney. Then kidney also produces the prostaglandins. Kidney also has a very important role, regulation of blood pressure by RAS system. Kidney will regulate the blood pressure via activation of RAS. आपने देखा है RAS मतलब क्या, renin angiotensin aldosterone system. Now also regulate the blood calcium level. Kidney will regulate the blood calcium level by producing the active form of vitamin D, that is calcitriol, which is ultimately responsible for the absorption of calcium and phosphate. This is the role of kidney. Kidney का रोल आपको मालूम है, very important. That's why किडनी का कोई डिसीज हो गया, ब्लड प्रेशर को दिक्कत होता है, किडनी का डिसीज हो गया तो फिर आदमी ना किडनी फेलियर से मरता है। These are the functions of kidney, right? Now एनाटॉमी ऑफ किडनी, एनाटॉमी नॉट मच इम्पोर्टेंट बट कभी कभी क्लास सी क्लास बी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। एनाटॉमी ऑफ किडनी इन अ शॉर्ट, तो किडनी इज अ बीन शेप्ड ऑर्गन, आपको मालूम है किडनी इज अ बीन शेप्ड ऑर्गन। कैसा होता है किडनी, बीन शेप्ड, मतलब आपका जो बीन होता है, किडनी इज अ बीन शेप्ड ऑर्गन। Kidney is a bean shaped organ, है ना, composed of a 3 layer of tissue. The outer one is a cortex. There are 3 layers on a kidney. The outer layer is cortex, which is a dark granular, है ना, dark होता है, granular दिखता है, which will continue to the corpuscles and collecting tubules of the kidney. At some places or at some instance, cortex invades the medulla to form a columns called as a column of Bertini. ये outer cortex का description. Now inner part is a medulla, outer cortex, inner one is medulla. Now it contains, medulla contains the tubular structures and vascular structure. मतलब इसमें कुछ tube like structure है and blood vessel है. They are arranged in a radial lines, known as the pyramids, and they are divided into 8 to 10 Malpighian pyramids. I will call you back. I am in a lecture. मैं एक half an hour के बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है।
So in inner medulla, so medulla contain tubular and vascular structures. They are arranged parallelly in a radial type of arrangement, divided into 8 to 18 malpharyngeal and malpharyngean pyramids. Malpharyngean pyramids. Now renal sinus क्या होता है? तो inner at the है ना सबसे अंदर लास्ट है ना in the medulla renal sinus is there known as renal pelvis. Renal pelvis क्या होता है? upper extended part of ureter which are subdivided into 2 or 3 major calyces है ना major calyces and 8 are minor calyces. मतलब जब यूरिन फॉर्मेशन होता है तो when there is a formation of urine in the nephron, so that is collected and collected in the renal pelvis via these calyces, 2-3 major calyces and 8 minor calyces. Now tubular structure of kidney मतलब क्या है? Tubular structure of kidney is made from a tube-like structure known as uriniferous tubules. Uriniferous tubules or simply nephron. So nephron बोलते हैं. This is the structure of your kidney ना कुछ है ना ऐसे होता है बीन शेप्ड ऑर्गन्स इसका साइज शेप ये वो सब आपको 12th में हो चुका है that is a not of import वो आपको मालूम होना चाहिए. Now outer is nothing but the cortex. Outer area is nothing but the cortex. Outer area is a cortex. This is known as the outer area is a cortex. Right. This after that there is a medulla. In the medulla you have pyramids. These are the pyramids. Pyramids क्या है? Pyramids is nothing but the arrangement of vascular structure, vessel, tubes and blood vessel contain tubular and vascular structure arranged radially. That will get a shape of pyramid. The pyramid. Renal pelvis is the renal pelvis. So it is an opening for the ureter. This part is the renal pelvis. Now calyces, major, minor calyces, major calyx. Major calyces मतलब क्या? बड़ा वाला देखो this one is minor calyces. जो यूरिन फॉर्मेशन होगा यहाँ से और कलेक्ट होगा यहाँ पे ये माइनर calyces will unite to form major calyces. This one is the major calyces. This is also one major calyces that will collect the urine which is formed by your nephron and that will send to your ureter. This one is ureter. Now blood supply to the kidney is done by renal artery. So renal artery will supply the blood and blood will drain by renal vein. So the area cortex, the cortical area of kidney, you have cortical blood vessels. Kidney structure. Now nephron, the structural and functional unit of kidney is a nephron. Around 1 to 1.2 millions of nephron are present in the kidney. है ना उसके भी nephrons के क्या पार्ट है आपके? तो nephron is nothing like a tubular structure. It is a structural and functional unit of kidney. So nephron. Parts of nephron क्या है? So this part is known as a glomerulus. This part. Together glomerulus and blood vessel is known as a Bowman's capsule. They are the capsule like a part. Together they are known as a Bowman's capsule. Second part होता है आपका नेफ्रॉन का proximal convoluted tubule PCT. Proximal convoluted tubule PCT. This is the PCT. ये जो part है. Third part is a DCT, distal convoluted tubule. Third part is a loop of Henle. This is known as a loop of Henle. Fourth part यहाँ पे और एक बार मैं बताता हूँ आपको.
So parts of nephron, first part क्या है, this is known as a glomerulus. Glomerulus क्या है, it is a network of capillaries, network of blood capillaries in the nephron, glomerulus. This part is known as a Bowman's capsule. Bowman's capsule क्या है, it is a part of nephron in which there is a network of your blood vessels, है ना. Then second part होता है PCT, third part is a PCT, proximal convoluted tubule, this is a PCT. Yeah. Then fourth part is nothing but the loop of Henle, ascending, descending, this is a descending loop of Henle, this is the ascending loop of Henle. After that there is a distal convoluted tubule, this part is known as a distal convoluted, distal convoluted tubule. Convolution मतलब convoluted मतलब कर्व है वो, है ना. Then next part is a sixth part is the collecting tubule, है ना, collecting tubule. Now loop of Henle में दो पार्ट होता है, descending loop of Henle, descending ascending loop of Henle. And now blood supply to the nephron is done by renal artery. Renal artery will carry oxygenated blood to the kidney. Renal vein will carry deoxygenated blood from the kidney. तो ये renal artery है, ये vein है, तो artery will send blood to glomerulus. Now this one is known as afferent arteriole, जो blood, जो artery blood लेके जा रही है इसमें glomerulus में, this one is known as afferent arteriole, this one is known as efferent arteriole. Now there is a difference in the size of these two. Afferent arteriole का size बड़ा होता है, efferent का size कम होता है. That's why यहाँ पे जो glomerulus है यहाँ पे pressure create होता है. Because of the difference in the size of afferent and efferent arteriole, what happens? There is a generation of hydrostatic pressure over there, and because of that pressure, there is a filtration. Okay. Now this is overall structure of your nephron, structure and functioning of kidney. 1 to 1.5 million of nephron are present in the kidney. मालूम है. Now nephron, you can see nephron, or it is known as a renal tubule. कोई renal tubule बोलते हैं. Now nephron has a two part. First one is known as a renal corpuscle. Renal corpuscle में आपका glomerulus होता है and Bowman's capsule होता है. It is a glomerulus मतलब क्या? It is a network of your blood capillaries. Tubular portion में क्या आता है? Tubular portion of nephron. In that you have PCT, proximal convoluted tubule. Then loop of Henle and distal convoluted tubule. Loop of Henle में again descending limb. Descending limb में दो है, thick descending limb and thin descending segment or limb. बीच में है hairpin bend, hairpin bend. बाद में ascending limb, again thick and thin and thick ascending limb. It is a part of nephron. Now we'll see again urinary system, है ना. It is a main excretory system of body and having following functions. Function क्या है? Maintenance of hemostasis, water balance, electrolyte balance, removal of waste product of metabolism like uric acid, excess of iron, drugs, production of some hormones, erythropoietin, etc. etc. Stimulate the formation of valves. ये अपन ने देखा है. अब किडनी में क्या है? Kidney will extend from 12th thoracic vertebra to 3rd lumbar vertebra. 12 thoracic vertebra है, vertebral column में 12 नंबर का thoracic vertebra to the 3rd number of lumbar के बीच में किडनी मिलेगा आपको, राइट. किडनी है ना, there are two kidneys, left and right. So left kidney is slightly lower than right kidney. तो लेफ्ट किडनी क्या है कि स्लाइटली लोअर होता है, एक्सटेंड होता है फ्रॉम राइट किडनी. तो एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पे? एड्रेनल ग्लैंड इज प्रेजेंट सुपीरियरली. सुपीरियर मतलब ऊपर, इंटीरियर मतलब नीचे. सुपीरियरली टू द ईच किडनी. Kidney is having 3 layers of tissue: outer fibrous corpuscle, outer fibrous capsule, middle cortex, and inner medulla. Conical shaped striation or renal pyramids.
कैलाइसिस क्या होता है? दे आर द पेस मेकर फॉर किडनी। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द पेस मेकर ऑफ किडनी? कैलाइसिस आर द पेस मेकर ऑफ किडनी। पेस मेकर मतलब क्या है? यूरिन का जो पेरिस्टाल्सिस होता है, नोन एज यूरिनरी पेरिस्टाल्सिस, यूरिनरी पेरिस्टाल्सिस होता है, उसको स्टार्ट करने वाला कैलाइसिस है। तो कैलाइसिस विल स्टार्ट द peristaltic movement of urinary system. That's why calyces are called as a pacemaker of kidney, which is composed of involuntary muscle. और nephron क्या है? Nephron is a structural and functional unit of kidney, tubular structure. 3 centimeter होता है, 3 centimeters in the length. Structural and functional unit of kidney tube, which is closed at one end and open at one end. एक जो एंड है इट इज ओपन एंड वन क्या है? क्लोज है। सो ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड, मतलब इट इज क्लोज्ड एट वन एंड। एट बाउमन्स कैप्सूल इट इज क्लोज्ड, ओपन एंड टू कलेक्टिंग ट्यूब एट द अदर एंड। बाउमन्स कैप्सूल क्या है? बाउमन्स कैप्सूल कंटेनिंग ग्लोमेरुलस इज अ कप शेप्ड ब्लाइंड एंड ऑफ नेफ्रॉन। उसके बाद में पीसीटी होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूबुल। उसके बाद में लूप पेनले होता है, उसके बाद में डीसीडी होता है, लास्टली कलेक्टिंग डक्ट होता है। दीज आर द पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। नाउ यूरिन फॉर्मेशन है ना। तो पहला यूरिन फॉर्मेशन में स्टेप्स क्या है? फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज, याद रखना है आप, first step of urine formation is taking place by in step urine formation. यहाँ पे urine formation पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन दूसरा स्टेप होता है ना, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। तीसरा स्टेप होता है एक्टिव सिक्रीशन। यूरिन फॉर्मेशन इज अ three-step process in which first step is a filtration or active ultra filtration उसको बोलते हैं, ultra filtration और simple filtration और glomerular filtration। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और सिंपली फिल्ट्रेशन। सेकंड स्टेप होता है सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन एंड थर्ड स्टेप होता है एक्टिव सिक्रीशन। तो यूरिन फॉर्मेशन इज अ 3-step प्रोसेस। दोस्तों याद रखना है, पहला स्टेप होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और फिल्ट्रेशन इन द ग्लोमेरुलस। सेकंड होता है सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन एंड थर्ड होता है एक्टिव सिक्रीशन। पहला जो स्टेप है फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इन द ग्लोमेरुलस। नाउ व्हाई देयर इज अ फिल्ट्रेशन? नाउ एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट मतलब क्या है? जो आपका आर्टेरियोल जो है, जो जिसमें जो आर्टेरियोल नेफ्रॉन में जाएगा उसको बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। तो एफरेंट आर्टेरियोल विल सप्लाई ब्लड टू द बाउमन कैप्सूल। Afferent arteriole will divide into capillaries, and then capillaries will again become a efferent arteriole. Now the diameter, difference in diameter. Afferent arteriole जो होता है, afferent arteriole is a wide in nature. Renal artery goes into the glomerulus and efferent arteriole, efferent मतलब जो छोटा है, efferent arteriole इट इज अ नैरो इन द साइज, मतलब एफरेंट आर्टेरियोल साइज में बड़ा होता है, इफरेंट आर्टेरियोल साइज में मतलब कम होता है डायमीटर में। बिकॉज ऑफ दैट डिफरेंस इन द डायमीटर, so there is a pressure. Afferent arteriole, as afferent arteriole is a wide in size and efferent is a narrow in size. So 20% of cardiac output, 20% of cardiac output then goes to the kidney. 20% of cardiac output goes to the kidney. Now blood is filtered in a capillary network made
मेड बाय ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में जो कैपिलरी नेटवर्क होता है उसमें ब्लड फिल्टर होता है, तो 20% कार्डियक आउटपुट होता है वो किडनी को जाता है, तो 20% आउटपुट कार्डियक आउटपुट विल गेट, किडनी विल गेट 20% कार्डियक आउटपुट and blood is filtered in the capillary network of glomerulus. Everything is filtered. Blood में क्या क्या है, बहुत सारा कंपोनेंट होता है, ब्लड, ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, प्लाज्मा प्रोटीन्स, वाटर है ना, बाकी ग्लूकोज, ये वो सब अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, आयंस, सब कुछ होता है ना। सो एवरीथिंग इज फिल्टर्ड एक्सेप्ट ब्लड सेल। तो ब्लड सेल फिल्टर्ड नहीं होते एक्सेप्ट ब्लड सेल एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स। सो एवरीथिंग इज फिल्टर्ड in the glomerulus except blood cells and plasma proteins due to the difference in the pressure. Difference कहाँ पे हो रहा है pressure से, because afferent arteriole is a wide, efferent is a small. तो देखो आप एक पाइप जो है ना, यहाँ पे देखो जाने वाला पाइप कितना है, जाने वाला पाइप बड़ा है, निकलने वाला पाइप क्या है, निकलने वाला पाइप छोटा है, क्या होगा? तो there is a pressure difference and that pressure difference creates a pressure in the glomerulus for the filtration. Due to the difference in the pressure at a glomerulus, blood pressure, glomerular pressure and filtrate pressure है ना, different type of pressure at a glomerulus, क्या क्या है, glomerular pressure, filtrate pressure and blood pressure. Now due to difference in the diameter, due to difference in the diameter of arterioles, capillary hydrostatic pressure of 55 mm of Hg, कैपिलरी में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होता है कितना, 55 mm of Hg और 7.3 kPa. Now this hydrostatic pressure is opposed by the osmotic pressure of blood. Osmotic pressure of blood कितना होता है, 30 mm of Hg और 4 kPa, and filtrate pressure होता है 15 mm of Hg, mercury millimeter. So due to difference in the size of afferent arteriole and efferent arteriole, so there is a creation of hydrostatic pressure in the capillary of glomerulus, which is around 55 mercury millimeter. Now this pressure is opposed by blood, and this pressure is opposed by osmotic pressure of blood, which is a 30 mercury millimeter, and filtrate pressure, which is a 15 mercury millimeter. फिल्टर मतलब जो फिल्टर हुआ है उसके ना, जो वो ना नेट प्रेशर क्या होगा फिर यहाँ पे ना, 55 माइनस 30 प्लस 15, 55 is nothing but the hydrostatic pressure, है ना, opposed by है ना osmotic pressure of blood and filtrate pressure, तो इन दोनों को प्लस करना है, 45. Net pressure is nothing but the 55 mm of Hg. So volume of filtrate formed by kidney per unit time, इसको अपन क्या बोलते हैं, GFR. What is GFR ना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ GFR. What is GFR? So it is a volume of filtrate formed by both kidneys from the blood per minute. Volume of filtrate formed by both kidney per minute is a glomerular filtration rate, is a GFR, glomerular filtration rate. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, what is a normal GFR? 125 ml per minute is a normal value. 125 ml per minute is a normal value of GFR. वो GFR का नॉर्मल वैल्यू याद रखना है, 125 ml per minute. What is GFR? Is the volume of filtrate formed by both kidney per unit time. Normal GFR is a 120 ml per minute. Now GFR is measured by using, है ना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. GFR मतलब glomerular filtration rate is closely related to excretion of creatinine. क्रिएटिनिन जो होता है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस है ना, एंड सेकंड होता है इनुलिन.
There are two compounds that can be used to study the GFR rate. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट स्टडी करने के लिए दो कंपाउंड यूज कर सकते हैं आप. फर्स्ट है आपका क्रिएटिनिन, सेकंड है आपका इनुलिन. इनुलिन मतलब क्या? इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज. आपने देखा है इसमें किसमें? कार्बोहाइड्रेट में. सो इनुलिन एंड इस creatinine clearance and inulin clearance both are used to measure the GFR. ये एडिशनल लेवल दिया यहाँ पे, क्वेश्चन आ चुका है. Now nearly about 98% filtered blood by the kidney is reabsorbed. तो जो जितना फिल्टर हो चुका है 100% फिल्टर हो चुका है नहीं होता. About 98% blood is filtered and out of that filtered again 98% of is reabsorbed into the blood. क्यों? Because देखो जो ब्लड फिल्टर हो चुका है, ब्लड में से क्या फिल्टर हुआ है? सब कुछ फिल्टर हुआ है एक्सेप्ट ब्लड सेल एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो उसमें जो फिल्टर हो चुका है उसमें क्या रहेगा? तो इन दैट यू हैव सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, यू हैव कैल्शियम, यू हैव फॉस्फेट आयंस, you have bicarbonate ions, you have amino acids, you have glucose, you have essential elements, trace elements, you have vitamins. So rest whatever is filtered, in that you have component which is important to your body. जो filtered हो चुका है उसमें important component है, so वो body के लिए लगते हैं. That's why there is a reabsorption of that component in the body. So reabsorption of glucose, amino acids, vitamins, ions, bicarbonate ions, or whatever ions are there, they are reabsorbed into blood. So out of 98%, out of 100% filtrate, 98% filtrate is again absorbed with the water. तो सोडियम का reabsorption ज़्यादा होता है, सोडियम reabsorption होता है. जैसे 9 out of filtered blood 98% is reabsorbed, only 2% blood is formed. So 98% is reabsorbed, this 98% filtered sodium is reabsorbed. Along with the sodium, water will also reabsorb. मैंने बोला है सोडियम और वाटर का क्या चल रहा है, अफेयर चल रहा है तगड़ा वाला, एक में के बिना जिंदा नहीं रह सकते. So nearly 98% of filtered blood is by the kidney is reabsorbed, only 1 to 1.5 liters, only 1 to 1.5 liters is excreted as a urine. जितना ब्लड फिल्टर हो रहा है उस इतने का सिर्फ 1 to 1.5 लीटर is excreted as a urine. और फिल्ट्रेशन क्या है? It is auto regulated process. Filtration is auto regulated. Filtration क्या है? Is auto regulated process. Filtration is auto regulated process. It is not under the control of nervous system, so reabsorption of nutrients and limited amount of nitrogenous waste is also there. तो पहला हुआ आपका क्या? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, बाद में सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन. ये हुआ रे. एक्टिव सिक्रेशन मतलब क्या है? Those which is not important for your body, that will be again secreted in the urine, in the nephron. That is known as active secretion. जो नहीं लग रहा है वो वापस से फेंक देगा, जो लग रहा है वो लेगा, जो नहीं लग रहा है वो फेंक देगा. सो यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय 3 process. First one is a glomerular filtration, second one is a selective reabsorption, and third one is a active secretion. ठीक है. Now same process explained over here. देखो, this is a part of kidney, this is a part of nephron, glomerulus. Glomerulus. This is known as afferent arteriole. So it is a artery which will supply blood to the glomerulus, and the artery which will leave the glomerulus is known as efferent arteriole. तो afferent arteriole का साइज कितना है? afferent arteriole का साइज बड़ा है, efferent का क्या है? कम है. बीच में क्या है? capillaries network. Now due to difference in the size, there is a creation of pressure over here. यहाँ पे क्या होता है? प्रेशर क्रिएट होता है, known as hydrostatic pressure. Due to difference in the size, there is a creation of hydrostatic pressure over here. So hydrostatic pressure, and that because of that filtration affected. Okay?
whatever is required in the body, that is known as the reabsorption, selective reabsorption, which is not required for body, that is again excreted in the urine, known as a secretion, active secretion. Now यहाँ पे कुछ दिया है, size and cells of different parts of nephron and collecting duct. Bowman's capsule में जो epithelial cells है, in the Bowman's capsule epithelial cells may in a size of 200 micron. Flattened type of epithelial cells are there. In the PCT, cuboidal type of cells with the brush borders. Cuboidal मतलब क्या? In the PCT, cuboidal epithelium is there. In the Bowman's capsule, flattened epithelium. Okay. In the PCT, cuboidal epithelium size इसका है 55 micron, length है 15 mm, length है 14 mm. In the thick ascending segment of loop open leg, again cuboidal cells with the brush border, का length है 6 mm, size है उसका 5.25 micron. Thick ascending limb, hairpin bend and thin ascending limb of flattened epithelium, उसका ये ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है 15 माइक्रोमीटर. डिस्टल कम्युनिकेटिव डिस्टी में क्या है? क्यूबोइडल एपिथेलियम विदाउट ब्रश बॉर्डर, और कलेक्टिंग लूप में क्यूबोइडल एपिथेलियम विदाउट ब्रश बॉर्डर. नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन and secretion of urine. So glomerular filtration is the first step, selective reabsorption as I told you is the second step, and active secretion is the third step. तो कंपोजिशन ऑफ यूरिन क्या है? यूरिन में क्या क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ यूरिन इंपॉर्टेंट है. 99% क्या यूरिन में? वाटर है. 99% ऑफ योर यूरिन इज वाटर. 2% यू हैव यूरिया. अंबर कलर ऑफ यूरिन क्यों होता है? यूरिन विल लुक लाइक अ पेल येलो. और यूरिन का कलर देखेंगे आप तो पेल येलो होता है. Why? The amber color of urine is because of the presence of urobilin, which is a bile pigment. The color of urine is because of the bile pigment known as urobilin. Then specific gravity of urine क्या होता है? 10202 1030 centipoles. And pH of urine is a 4.5 to 8. Question already आ चुका है. pH of urine. Normal value of urine 1000 to 1.5,000 ml पर डे, मतलब 1 से 1.5 लीटर तक यूरिन बनता है दिन में. नॉर्मल वैल्यू ऑफ यूरिन. वाटर इज एक्सक्रीटेड मेनली वाया किडनी in the urine. Also water, some amount of water is excreted in the expired here, in the feces also in case of diarrhea and alcohol, and also through the skin. This week. Minimum urinary output, that is the smallest amount of urine that is to be excreted by body, है ना. और it is nothing but the क्या है कि minimum urinary output क्या है कि it is the amount, smallest amount or smallest volume of urine required to excrete the body's waste product. कितना है? 500 ml. मतलब दिन में कम से कम 500 ml यूरिन बाहर जाना चाहिए, अदरवाइज आपका वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं जाए. मिनिमम urinary output is of 500 ml per day. Excess of urinary output is controlled by ADH, anti-diuretic hormone produced by the gland. Osmoreceptor detect the change in the osmotic pressure of the blood, and according to that, ADH is released or secreted by inhibitive feedback mechanism. So hormones regulating the tubular reabsorption in the kidney. कौन सा हार्मोन है? पहला है aldosterone. What will it do? It will increase the sodium reabsorption. देखो यहाँ पे क्या है? सोडियम का reabsorption बढ़ रहा है. कहाँ पे? In the ascending limb, है ना, in the distal convoluted tubule, DCT and collecting duct. मतलब loop open leg, collecting duct and DCT. यहाँ पे क्या है कि सोडियम का reabsorption करेगा. reabsorption मतलब क्या? जो फिल्ट्रेट हो चुका है वो फिर से ब्लड में आएगा. And along with the sodium, water will also come. मैंने पहले बोला है सोडियम एंड वाटर का क्या चल रहा है? अफेयर चल रहा है. सोडियम एंड वाटर, सोडियम एंड वाटर. Whenever sodium will be absorbed,
water will be absorbed. Whenever sodium will be excreted, water will be excreted. Remember. Then angiotensin second. तो आपको मालूम है angiotensin second also stimulate the aldosterone. तो sodium and water is absorbed. The PCT thing as an emblem, PCT collecting duct. जब मतलब angiotensin second क्या है, वो भी aldosterone के जैसे एक्ट करता है, क्योंकि स्टिमुलेट करता है. Then antidiuretic hormone ADH again increases the water reabsorption in the distal DCT and collecting duct. Then atrial natriuretic factor बोलो या पेप्टाइड बोलो, atrial natriuretic peptide ANP बोलते हैं इसको, ANP, which is produced by atrium of the heart, that decreases the sodium reabsorption. मतलब क्या, ये डायलिसिस करता है. We have seen ANP and BNP, brain natriuretic factor or brain natriuretic peptide produced by ventricles. तो again decreases the sodium reabsorption and causes the diuresis. तो ये दोनों क्या करते हैं, डायलिसिस करते हैं. Whenever there is a stretching on heart muscle, हार्ट के एट्रियम में वेंट्रिकल में स्ट्रेच हो गया, तो in response to that atria will release one peptide known as atrial natriuretic peptide ANP, and second vein will produce ventricles will produce a peptide known as a brain derived natriuretic peptide, brain natriuretic peptide BNP, which causes the diuresis in case of congestive heart failure. Parathyroid hormone increases the reabsorption of calcium, magnesium, hydrogen, decreases the phosphate reabsorption. Calcitonin क्या करता है, calcitonin decreases the calcium reabsorption. These are the hormones which plays important role in the regulation of tubular reabsorption. मतलब किडनी में NHRM में reabsorption किसका करना है नहीं करना है, वो रोल किसका है. Hormone affecting the reabsorption of ions. Parathyroid hormone PTH, thyroid hormone regulate the reabsorption of calcium and phosphate, the distal convoluted tubule. Although ADH is secreted by antidiuretic hormone produced by posterior lobe of pituitary, increases the permeability of DCT and collecting tubules, है ना. increases the water reabsorption. एंटीडायूरेटिक, उसका नाम ही क्या है, एंटीडायूरेटिक. तो वाटर का reabsorption करेगा, डायूरेसिस नहीं होगा. सिक्रेशन इज रेगुलेटेड बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. दूसरा हार्मोन कौन सा है, अल्डोस्टेरॉन. कॉन्ट्रास्टेरॉन, अल्डोस्टेरॉन. तो अल्डोस्टेरॉन इज सिक्रेटेड बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स, इंक्रीजेस द reabsorption of sodium and water, है ना, and excretion of potassium. हार्मोन सिक्रेशन इज रेगुलेटेड बाय अगेन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. तीसरा होता है ANP, चौथा होता है BNP. ANP मतलब एट्रियल नाइट्रेटिक पप्टाइड प्रोड्यूस्ड बाय एट्रियम ऑफ योर हार्ट इन रिस्पांस टू द स्ट्रेच. डिक्रीजेस द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम, मतलब डिक्रीजेस द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम मतलब इंक्रीजेस द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम. सोडियम एक्सक्रीट होगा तो वाटर भी होगा और डायलिसिस होगा. ठीक है, द PCT and collecting duct. Again regulation कैसे है, negative feedback mechanism. There is one more, है ना, there is one more known as a BNP. BNP कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, in the ventricles, in the ventricles. You can see over here what are the hormones that or factors that regulate the reabsorption of sodium and water in the kidney. देखो, stimuli for renin release और stimuli for renin secretion. Stimuli क्या है इसका, stimuli for renin secretion मतलब decrease in the blood pressure, decreased blood pressure, low blood pressure or low extracellular fluid volume or sympathetic stimulation और लो प्लाज्मा सोडियम. ये सब क्या है, स्टिमुलस है फॉर द किडनी टू रिलीज द रेनिन. ब्लड प्रेशर कम हो गया, है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया, या फिर एनर्जिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया, या फिर लो प्लाज्मा सोडियम दैट विल स्टिमुलेट किडनी,
that will stimulate a juxtaglomerular process of kidney to release a renin. In your plasma, in your blood में क्या है आपके, प्लाज्मा में क्या है आपके, in your plasma, in your blood you have a angiotensinogen. What is that? Is a inactive peptide, glycopeptide होता है. So renin will convert angiotensinogen to angiotensin 1 because renin क्या है, proteolytic enzyme. So angiotensin 1 is circulated in the blood, ये blood में ही होता है, and blood में जब वो ये lungs में पास होता है, when angiotensin 1 will pass through a lungs में जाता है तो lungs में एक एंजाइम होता है known as ACE, angiotensin converting enzyme, that will convert angiotensin 1 to angiotensin 2. angiotensin 2 क्या है, vasopressor होता है, also stimulate the aldosterone. तो angiotensin 2 क्या करता है, regulate the glomerular filtration rate, increases the blood pressure by increasing the peripheral resistance, also increases the water intake, increases the ADH secretion, increases the CRH and ACTH secretion. Angiotensin 2 is converted to angiotensin 3 by angiotensinase. angiotensinase convert होता है किसको, 2 to 3. जो 3 है वो angiotensin 2 जैसे एक्ट होता है, increases the aldosterone secretion and causes the vasoconstriction. बाद में angiotensin 3 4 में भी होता है कन्वर्ट. Now 2 kidneys we have seen, urine formation we have seen, factors affecting urine formation we have seen. Now 2 ureters, 2 ureters भी होते हैं. What are the ureters? They are the muscular tube. So transport the urine from kidney to bladder. What is the role? Ureter क्या करते हैं? Ureter will transport the urine from kidney to bladder. So it is around 25 to 30 centimeter long tube, 3 mm in the diameter. There are 3 layers again. Outer fibrous layer होता है, outer fibrous tissue, middle muscular layer and inner mucous layer composed of a transitional epithelium. Function क्या है? The functions to transport urine from kidney to bladder by peristaltic contractions of smooth muscle, and that originate from pacemaker, that is a calysis. Minor calysis से ये peristalsis start होता है. Rhythmic contraction of smooth muscle कहाँ से? Minor calysis. They act as a pacemaker for urine peristalsis or urine flow. वहाँ से start होता है यानी जाता है. Peristalsis occurs several times in a minute. Now one urinary bladder में एक urinary bladder भी होता है. What is the function of ureter? Ureter का function क्या होता है? To carry urine from kidney to the urinary bladder. It is a function of ureter. There are 2 ureter, 25 to 30 centimeter long, 3 mm in the diameter. Layer 3 होते हैं, उसके ऊपर एक outer fibrous layer, middle muscular layer and inner mucosal layer made from a transitional epithelium. ना? One urinary bladder, एक urinary bladder है आपका. Urinary bladder क्या है? It is a you can say it is a collection center or temporary storage of your urine. It is a sac-like structure. It's a pear-shaped होता है ये, and may become pear-shaped and may become a dome-shaped after filling the urine. There is increase in the size of this urinary bladder when there is a filling of urine. Now urinary bladder is composed of 3 layers again. Outer connective tissue containing blood vessel and nerves and covered surface with the peritoneum. Middle layer is a muscular layer known as a muscular
layer known as the detrusor muscle of bladder. Detrusor muscle of bladder. When detrusor muscle will contact, you can able to pass your urine. Last में होता है urethra. Urethra क्या है? It passes the urine from urinary bladder to exterior. Male urethra is longer than female. You know that. Now urethra has a two sphincter, मतलब gate. You can say gate of smooth muscle. So internal sphincter, which is involuntary in nature. अंदर का sphincter involuntary. And external sphincter, which is voluntary in nature. Around 300 to 400 ml urine, when it accumulates in the bladder. जब 300 to 400 ml जब bladder में urine accumulate होता है, जमा होता है, तो वो stimulate the autonomic nerve fiber via spinal reflex in the infants and bladder for the micturition. में आपको micturition होती है. Now as there are two sphincter, दो sphincter जो होता है, internal sphincter and external sphincter. internal sphincter क्या है? ये तो involuntary होता है, but external sphincter is involuntary in the children's. And as there is a maturation, जब आप बड़े होते हो तो external sphincter become voluntary. पहले ये भी involuntary होता है बच्चों में, इसलिए बच्चों को सुसु करने का समझ नहीं होता है. क्यों? Because in the children you have both sphincter are involuntary in nature, but in the adult external sphincter is a voluntary in nature, and that's why we can hold the urine, है ना. तो बच्चे होते हैं उसमें internal sphincter भी involuntary होता है and external sphincter भी involuntary होता है. That's why children they used to pass the urine anytime. Now signs and symptoms of disorders of urinary system. urinary system में disorders कितने? ओलिगोयूरिया. ओलिगोयूरिया मतलब क्या? ओलिगोयूरिया. ओलिगोयूरिया मतलब ओलिगो मतलब कम मतलब क्या? डिक्रीज. So when urine output is less than 400 ml per day, अगर 400 ml से लेके कम 400 ml से कम आप यूरिन बनाते हो, यूरिन पास करते हो, इसको बोलते हैं ओलिगोयूरिया. इन दैट केस ओलिगोयूरिया मतलब यूरिन फॉर्मेशन कम हो रहा है. ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू यूज डायूरेटिक्स. डायूरेटिक्स मतलब क्या है? दिस आर द ड्रग व्हिच इंक्रीजेस द यूरिन फॉर्मेशन. So in the case of oligouria, you have to use diuretics. Second है hematouria. Hematouria मतलब क्या? Presence of blood in the urine, है ना. अगर blood के traces आपकी urine में मिल रहे तो क्या है? हेमाटोयूरिया. क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब क्या? ग्लोमेरुलस का इन्फेक्शन हो गया है, फिर इन्फ्लेमेशन हो गया, दैट कैन रिजल्ट इन द, है ना. So there is a filtration of RBC, that can result in the filtration of RBC, and urine में RBC आएगा, blood आएगा. Also sometimes because of the bleeding in the urinary system, urinary tract में आपका bleeding हो गया तो भी hematouria हो सकता है. या फिर urethritis, urethra में infection हो गया, that can result in hematouria. ना proteinuria मतलब presence of protein in the urine. So appearance of protein in the urine due to abnormal filtration of blood. अभी डिटेक्शन ऑफ यूरिन, है ना, ये कैसे करना है? प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन कैसे डिटेक्ट कर सकते हो आप? जस्ट टेक अ यूरिन इन योर टेस्ट ट्यूब एंड जस्ट हीट इट ऑन अ फ्लेम. तो जब आप यूरिन को टेस्ट ट्यूब में लेके हीट करते हो, so if there is a cloudiness, if there is a, if there is a turbidity, that means there is a presence of albumin in the urine. अगर प्रोटीन यूरिन में आता है तो कैसे चेक करना है उसका टेस्ट भी है आपको. यू माइट हैव परफॉर्म ए प्रैक्टिकल इन द बायोकेमिस्ट्री. सो डिटेक्शन ऑफ albumin इन द यूरिन. जैसे यूरिन ले लो टेस्ट ट्यूब में, उसको हीट कर दो. हीट करने के बाद में क्या होगा? इफ
albumin is present, that will be coagulated and that will create turbidity, that will create opalescence in the urine. ठीक है. Now anuria मतलब क्या? Anuria मतलब absence of urine. Anuria मतलब absence of urine. Dysuria. Dysuria मतलब क्या है? पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन. जब आप पेशाब कर रहे हो तो आपको बर्निंग सेंसेशन आता है, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग द पासिंग ऑफ यूरिन. क्यों? इट माइट बी बिकॉज ऑफ द यूरेथ्राइटिस. आपका यूरेथ्रल इन्फेक्शन हो गया, यूरेथ्राइटिस हो गया, इन्फेक्शन हो गया. डिसयूरिया, पेन ड्यूरिंग द पासिंग यूरिन. देन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. क्या होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस? इट इज अ इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ glomerulus, which are of several type of glomerulonephritis के बहुत सारे टाइप है इसमें लिस्ट किया है. Sometimes it is also due to autoimmune reaction. autoimmune अगर है तो immunosuppressant ड्रग यूज करना है. अगर इन्फेक्शन की वजह से है तो एंटीबायोटिक्स यूज करना है. इफेक्ट ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया तो उसके कारण क्या हो सकता है? तो हेमाटोयूरिया, presence of blood in urine, asymptomatic proteinuria, acute nephritis, oliguria, hypertension, hematuria. Nephrotic syndrome is because of the several kidney disease characterized by generalized edema, hypoalbuminemia, hyperlipidemia and hyperlipidemia. Diabetic nephropathy. जिसको डायबिटीज है उसमें नेफ्रोपैथी होता है, मतलब किडनी का डिसीज. The cause of severe hypertension and severe long-standing hyperglycemia. तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी का कॉज क्या है? severe hypertension, long-standing hyperglycemia that will damage the blood vessels of kidney. Diabetic nephropathy. Kidney stones. Kidney stones क्या होते हैं? तो crystallization or deposition of crystals of stones of calcium sodium oxalate. सोडियम ऑक्सलेट और कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल डिपोजिट हो गए, वहाँ पे स्टोन बनेंगे, उसको बोलते हैं किडनी स्टोन. और उसको अलग अलग छोटा अगर है उसको बोलते हैं कैलकुलाई. एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस ड्यू टू इस्चेमिया, कार्डियोवास्कुलर शॉक, डिहाइड्रेशन, हेमोरेज, ट्रॉमा, एक्सेसिव बोन मायोकार्डियल इन्फेक्शन and surgery in the elder that can result in the acute tubular necrosis. ये symptoms disease है. You can see types of glomerulonephritis में इस टाइप देखो यहाँ पे ये लिस्ट है. diffuse proliferative glomerulonephritis, focal proliferative glomerulonephritis, membranous glomerulonephritis and minimal change in the glomerulonephritis. इसका बाकी छोड़ो, is not important. This is the ureter, structure of ureter. क्या है? ureter होता है. There are two ureter. This one is urinary bladder. Urinary bladder. This part is known as trigone. ये क्या है? urethral opening से. ureter orifice opening है ureter. This is known as external sphincter and this is internal sphincter. यहाँ पे देखो अच्छे से. Now glycosuria means what? Glycosuria, presence of glucose in the urine, presence of sugar in the urine which is abnormal and that occurs in the diabetes. Ketonuria मतलब क्या? Presence of ketone bodies in the urine that occurs due to the starvation. ना अगर आपको खाना नहीं मिल रहा है ना, आप स्टारवेशन में कीटोन्यूरिया हो सकता है. पॉलीयूरिया मतलब क्या है? इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन. नॉक्टूरिया मतलब क्या? पासिंग यूरिन इन द नाइट विदाउट अवेयरनेस. जो बच्चे होते हैं बेड में ही सुसु कर देते, पासिंग ऑफ यूरिन इन द नाइट विदाउट अवेयरनेस, नॉन एज नॉक्टूरिया. इनकॉन्टिनेंस मतलब क्या? ये टर्म आया हुआ incontinence, urinary incontinence. So again involuntary loss of urine, involuntary loss of urine in a patient. adult में अगर होता है तो उसको बोलते हैं incontinence, है ना.
frequency of micturition requiring to pass a small amount of urine frequently. Frequency of micturition अगर इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर सिंड्रोम. इसमें सोलिफिनेसिन नाम का एक टैबलेट है वो है. तो requiring to pass small amount of urine frequently, that is a in case of urethritis also frequency of micturition is increased. Micturition क्या है? It is a reflex to pass your urine. Drug causing acute tubular necrosis. जितने भी आपके पेन किलर्स होते हैं, aminoglycosides, NSAIDs, ACE inhibitors, lithium, paracetamol, they can cause acute tubular necrosis, chronic renal failure. If irreversible damage to the nephron is there, about 75% nephron is damaged. That is nothing but the chronic renal failure and great reduction in GRF. And वहाँ पे glomerular filtration rate बहुत ही कम होता है. Genetic abnormalities in the kidney. Genetic abnormality क्या हो सकता है? ये 2 किडनी है, एक misplaced kidneys, ectopic kidneys, 3 किडनी हुआ है. एक polycystic kidney disease जो आपने देखा होगा फेसबुक के ऊपर रील आते हैं ना, प्रेमानंद महाराज, उनको polycystic kidney disease है. Autosomal dominant polycystic kidney disease. Tumors of the kidney. Malignant tumor is the most common for the bladder and kidney. नेफ्रोब्लास्टोमा मतलब क्या है? किडनी नेफ्रोब्लास्टोमा मतलब नेफ्रॉन का ट्यूमर, उसको बोलते हैं वेल्म्स ट्यूमर. रिनल सेल कार्सिनोमा, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस एंड कंप्लीट सस्टेन्ड ऑब्स्ट्रक्शन. यूटीआईज, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. यूटीआई मतलब क्या? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, and because of the urethritis, inflammation of ureter, cystitis, most common in the women. UTIs are most common in the women because male urethra is long and suddenly get infection. Female urethra is small, so that's why females में ज़्यादा infection होता है urinary tract. Cystitis बोलते हैं उसको. Most common is because of the E. coli. This will end your urinary system chapter. If anybody has doubt, they can mention in the comment box or also can mention personally. Tomorrow morning we'll see diuretics chapter. I hope everybody has understood. कल सुबह अपन diuretics chapter देखेंगे pharmacology point of view. And after completing diuretics, we'll see the medicinal chemistry of drug acting on CVS and diuretics. पूरा medicinal chemistry उसका लूँगा. See you in the next lecture tomorrow morning 11 AM. सुबह 11 बजे लेक्चर होगा आपका, ठीक है, और शाम को भी होगा बिकॉज परसों मैं नहीं हूँ. I hope everybody has understood. Thank you.